So up to this, in support vector machine, what we learned, support vector machine is one, like it is also in classifier. हम regression में भी support vector machine use कर सकते हैं already learn. Okay, now so what we have to learn, otherwise support vector machine is also a linear classifier. What we have to learn in decision tree, KNN, naive bias. So already discussed that, but in SVM we have to just learn how to draw a single line. Okay, in SVM we have to learn how to draw a single line. Why the single line? Because it is just nothing but a classifier. That single line will class a testing data or a query point in either of the class. So now it is generally used in graph document classification where you have more than 4K features. But after that, we just conclude one thing. If we have a if we have actually like classify matrix with maximum number of zeros, or you can say that if you have a sparse matrix type of thing. Okay, if you have a highly sparse data, or consider if you have a low number of records. Okay, low number of records in the sense I mean to say few records, few documents are there, but large number of columns are there. Okay, few records are there, but large number of columns are there, then SVM is useful. Known to perform very well even with the very low training data. That is the thing. Okay, and with the large number of features in the sense I mean to say that is nothing but a number of columns. And one more thing, highly sparse data. Then SVM is generally most popular classifier to deal with this type of situation. Now we just on a conclusion that if you want to work with the SVM, then this was the actually equation. We have to go with this one, like sigma of I equals to 1 to n. What is that? I equals to 1 to n. That depends on the dimension. And xi zi in the sense xi w, that xi zi, that means it's nothing but an actually like weighted matrix, weighted vector, and x is nothing but a feature vector. What about the plus? It is this. So like generally हम लोग line equation यहाँ से लेके आए थे y equals to mx plus c. After that this was the another form of the equation. After that is for 2 dimension. For the 3 dimension, this one is there. For the like n dimension, it was something like that. w1 x1 to w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3, and not this one. यहाँ पे actually wn plus 1 आएगा. Okay, wn plus 1. That means one, yeah, dot dot dot, like n dimension के लिए dot dot dot, and lastly wn plus 1. Okay, so अगर इतना सारा लिखना है, then we can simply write down this one like I equals to 1 to n wi xi, and wn plus 1 equals to 0. Now this wi xi can be also written like this. Okay, the angular bracket w and plus b equals to 0. What about the angular bracket w, but then sigma of the summation of multiplication of w and x. Now that's that. So finally, that was the equation for the line. That was the equation for the line. Why we learned it? Because in SVM we have to just draw a line. And the line is nothing but a classifier. So now consider. Let me just start with the binary classifiers. So I want to just I have actually 2 labels. That is red and blue. We already learned this also in last session. So we have 2 labels, actually red and blue. So I want to just draw a line. After just getting the equation of the line, otherwise once you just decide the line, what about the line? अगर आपने कोई line draw किया, that means what you will actually. So here, after finalizing this line, I have this equation. Okay, wx plus b equals to 0. ये equation मुझे मिलने वाला है. तो इस equation से finalize क्या होगा? What is x? X is nothing but a feature. X is nothing but a feature. What about w and b? ये हम लोग को value मिलेगा. अगर हमने लाइन फाइनल किया गाइस, तो हम लोग को 2 वैल्यू मिलने वाली है w एंड b. सो w एंड b फाइंड आउट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. एक बार w और b मिल गया, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, जब भी टेस्टिंग डेटा आएगा, व्हाट वी विल डू, टेस्टिंग डेटा के जितने फीचर्स है, फीचर्स इन द सेंस x, उस x को इसी इक्वेशन में पुट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू एक्चुअली. w एंड b का वैल्यू हमारे पास होगा. x मींस व्हाट, इट इज नथिंग बट एन फीचर्स ऑफ द क्वेरी पॉइंट और टेस्टिंग डेटा. तो वो डेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे. w और b था, तो हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा. सो हम लोग को चेक करना है वो आंसर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0. सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0, आई कैन सिंपली से दैट आउटकम इज नथिंग बट रेड लेवल. Okay, if it is less than 0, then I can simply say that outcome is nothing but a blue level. So that's that. Okay, so finally what we have to do, that was the formula. हम लोग एक conclusion पे आए कि इस equation का हम लोग को sign चाहिए. मतलब will be will it a positive or negative? According to the sign, I can just classify this. Okay, so now, so in SVM, what we have to find out? So in SVM, we have to just find out the value of W and B. But after that, we realize, maybe there are lots of lines. यहाँ तो बहुत सारे line draw कर सकते हैं.
So which line we have to choose? Why we are just going to choose the line? The first thing is अगर line मिल गया that means हम लोग को W और B मिलेगा. So W और B अगर हम लोग को मिला, what about X? X is nothing but an query point features, or actually like you can simply say that that's nothing but a testing data type features. So इन सबको मुझे F के अंदर put करना है. After getting the after just computing the equation, after executing the equation, we will just get the sign of this. Okay, मैंने लोगों ने ये भी डिस्कस किया था प्लस बी और माइनस बी डजंट मैटर. ओके तो जैसे ही आप लोग को इसका साइन मिलता है उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओके इट इज फ्रॉम क्लास लेवल 1 और क्लास 2. बट नाउ द प्रॉब्लम इज मे बी देयर आर लॉट्स ऑफ लाइंस, एक से ज्यादा लाइन की पॉसिबिलिटी, जैसे कि हम लोग को यहाँ ग्राफ के अंदर दिख रहा है, वहां पे एक से ज्यादा लाइन की पॉसिबिलिटीज है. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3. सो व्हिच वन इज द बेस्ट वन? कौन सा लाइन हम लोग सबसे मतलब व्हिच वन इज द बेस्ट लाइन? Okay, but which is the best? कौन सा line choose करें? In short, line choose क्यों कर रहे? Because we want to find out W and B. That means the question is, what is the best value for W and what is the best value for B? Okay, so हम लोग को W और B का best value चाहिए. So after that we was in a conclusion that sir वो line choose करेंगे जिसमें margin सबसे ज्यादा हो. जैसे कि यहाँ मैंने एक line draw किया and this is the another line. So here margin यहाँ पे actually margin काफी ज्यादा है. ओके यहाँ पे मेरे पास मार्जिन काफी कम था, तो मुझे कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए? आई हैव टू चूज द लाइन विद द मैक्सिमम मार्जिन. आई हैव टू जस्ट चूज द लाइन विद द मैक्सिमम मार्जिन. ओके व्हाई वी हैव टू चूज द लाइन विद द मैक्सिमम मार्जिन? बिकॉज़ मान लो कि ट्रेनिंग टाइम पे मेरे कोई एक मतलब लाइक मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग डेटा नहीं था. अदरवाइज मेरे पास ऐसा था कि ट्रेनिंग टाइम का जो डेटा है उससे थोड़ा नॉइजी डेटा मुझे टेस्टिंग टाइम पे मिल रहा है. So मुझे एक्चुअली एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करना था, so that we will just choose like line with the maximum margin. Okay, so in short, what about this one? अगर मैं इस स्लाइड को हम लोग डिस्कस करें, so after getting the line, मान लीजिए एक बार लाइन डेवलप हो गया, तो गाइस ये जो लाइन डेवलप हुआ है, जो सेंटर से जो लाइन आ रहा है, लेट अस से कि दिस इज द रोड, ये पूरा का पूरा एक मेरा रोड है और हम रोड के सेंटर से पास ऑन हो रहे हैं. So this line is known as SVM, support vector machine. Okay, so that is actually known as SVM. Okay, that is actually known as SVM. एंड ये जो डॉट्स है, यहाँ जो मेरे पास एक डॉट है, दिस इज द डॉट जो एक्चुअली अपने लाइन का मतलब इन शॉर्ट दैट जस्ट रिप्रेजेंट द मार्जिन. सो नियरेस्ट पॉइंट है जो अपने लाइन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ऑन आइदर ऑफ द साइड. दिस आर एक्चुअली नोन एज सपोर्ट वेक्टर्स. These are actually known as support vectors. Okay, so I hope this is clear. So now margin of linear classifier. So what is the margin of linear classifier? What about this one? ये margin मतलब क्या? ये जो total width है वो क्या? It's a width of boundary could be increased. I'm just reading this. It is a width of boundary could be increased by before hitting a data point. In short, you have to choose a line जो margin. How to choose that line? So हम लोग को डेटा पॉइंट को हिट नहीं करना, बट नियर इससे पास आउट. गाइस मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, एसवीएम की बात नहीं कर रहा. ओके एंड गाइस एसवीएम इज आल्सो नोन एज मैक्स हाइपर प्लेन क्लासिफायर. इट इज आल्सो नोन एज हाइपर प्लेन क्लासिफायर. व्हाई हाइपर प्लेन? बिकॉज़ इफ यू आर इन वर्किंग इन n डायमेंशन देन इट विल बी हाइपर प्लेन. अगर आप प्लेन वर्क कर रहे हो इट विल बी अ लाइन. ओके सो नाउ द थिंग इज another thing is like what is the support vector? So support vector in the sense nearest point जो actually margin को push करता है. Okay, margin को push करता है. In short, these are the points which are actually known as support vectors. So the maximum margin linear classifier is the maximum, and one more actually like SVM is also known as actually maximum margin linear classifier. Okay, and what is the meaning of maximum margin linear classifier? It's a linear classifier with the maximum margin. Okay, it's a linear classifier with the maximum margin. In short, you have to choose SVM with the max margin, so that it is known as maximum margin linear classifier. Guys, please note down one thing. Like SVM is also used for the non-linear data. SVM is also used for the non-linear data, but up to this session हम लोग linear classifier का discussion करने वाले हैं. Okay, now this is the simplest kind of SVM जो यहाँ पे हमने draw किया है. That is actually linear SVM. That is actually linear SVM. Okay, non-linear SVM is also there. That means not कि भाई आप SVM को सिर्फ linear classifier की तरह ही use करें. Okay, it can work with the non-linear like distributed data also. So fine, I hope आप लोग को ये समझ में आया what is the meaning of support vector and what is SVM. तो हम लोग line finally conclude करेंगे, line जो finally find out करेंगे, that's nothing but an SVM. और जो मेरे boundary near about जो points है, this is nothing but an support vectors. Now the thing is, still our question is, sir, how to choose the line? So line कैसे choose करनी है जिसमें maximum margin हो?
और लाइन चूज करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट एक्चुअली W and T. फाइनली आई वांट टू जस्ट गेट W and B, मुझे W और B ही फाइंड आउट करने हैं, बट ऐसे W और B फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पे मार्जिन मैक्सिमम हो, जहां जिसके लिए मेरा मार्जिन मैक्सिमम हो. किसके बीच का मार्जिन चाहिए हम लोग को, सपोर्ट वेक्टर एंड SVM दोनों के बीच में मैक्सिमम मार्जिन चाहिए. ओके, नाउ फाइन. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मार्जिन, मैक्सिमम मार्जिन करने का बेनिफिट क्या है. Otherwise, there are different things. There are different actually. One minute, let me just remove all this. Okay, like maximum margin की कुछ ना कुछ benefits हम लोग को different और करने कुछ अलग-अलग benefits बोले. The first thing is maximizing the margin is good according to the institution, and this is PAC. Yeah? That is PEC theory. That is not OAC. Just a moment. That is PAC. Or that is a PEC theory. What is PEC theory? It is probably approximately correct. What is that? Probably approximately correct. That means what? अगर आप कोई भी एक पॉइंट का उसमें एरर कितना, if you want to just like predict, like अगर ये इस पॉइंट को मैं प्लॉट करूं, कोई भी एक पॉइंट को मैं प्लॉट करूं, पॉइंट इन द सेंस क्वेरी पॉइंट, then what will be the actually error percentage? तो मुझे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इस पॉइंट के लिए एरर कितनी परसेंटेज होगा. So that can be find out by using the PEC theory. Okay, probably approximately correct theory. उससे वो find out होगा. So अगर आपका maximum margin होगा, so PAC सबसे minimum होगा. In short, जो PAC का outcome होगा वो सबसे minimum होगा. In the sense जितना max margin उतना error percentage कम. So PAC theory हम लोग को इतना इन्फॉर्म करता है, ये ऐसा बताता है कि मैक्सिमम मार्जिन implies that only support vectors are important. What do you mean by support vector? Support vector in the sense nearest point. Support point vector in the sense that's nothing but the nearest point. Other training examples are ignorable. In the sense ये कुछ ऐसा मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, because these points are important one. This one or this one or this one are the important one. Remaining points like this are all are the points. This all points are not that much important actually, because जो line draw करेंगे या जो margin find out करेंगे वो actually support vectors के हिसाब से ही हम लोग find out करेंगे. That means these are the important data, remaining are not the important data. Okay, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है, implies that only support vectors are important. अगर आप maximum margin की बात करते हैं then only this like points are important. Other training examples are ignorable. Other training examples in the sense other points are ignorable. So now that's that. So that is something about the support vector machine. And finally, the conclusion is I want to just maximize the margin. And for that, I have to choose like best best W and best B. मुझे ऐसा लाइन चूज करना चाहिए जिसके W और B की मदद से मार्जिन मैक्सिमाइज. So let me just perform some mathematical task. This is quite like confusing slide. Okay, but let me start. So थोड़ा सा गाइस इसके लिए मैं मतलब मैथ्स की जरूरत है हम लोग को, थोड़ा इंजीनियरिंग मैथ्स 8 9 10th का मैथ्स की जरूरत है हम लोग को. मैं कुछ आपको सब लाइक इसको समझने के लिए कुछ रेफरेंस वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा. ओके, बट लाइक फाइनलाइज, लेट मी जस्ट फाइनली डू वन थिंग. हमारा एक चीज यहाँ पे फाइनल हुआ कि दिस इज माय SVM, जहां पे WX + B = 0 होगा. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. So we want to choose the line here in this slide. We just finalize one thing, and that one thing is we want to choose the line where WX + B = 0. And this line मतलब ऐसा W और B, otherwise जो line हम लोग को डेवलप होगा उसके राइट हैंड साइड पे हम 0 पुट करेंगे. W and B we want to find out. Okay, but finally अगर हमको वो लाइन मिल गया, then this will be the equation for that line. In short, SVM का ये equation होगा. Okay, so consider here I have an SVM. यहाँ मुझे SVM मिल चुका था. So the equation of the SVM is actually WX + B = 0. Fine. So this is nothing but an SVM. Now अगर मुझे margin find out करना है, margin in what? SVM के लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैरेलल लाइन जाएगा. मेरा वर्ड नोट डाउन करिएगा, पैरेलल लाइन जाएगा. उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैरेलल लाइन जाएगा, उसके राइट हैंड साइड पे एक पैरेलल लाइन जाएगा. यहाँ पे अबोव एंड बिलो आप कंसीडर कर सकते हैं. इन शॉर्ट आई मीन टू से अगर आप इसकी बात करें, हियर इट इज, अगर आप इसकी बात करें मुझे मैक्सिमम मार्जिन चाहिए. So these two boundaries, this line and this line, will finalize the actually like this, the upper line and the bottom line. Otherwise, the middle line and above line
will finalize actually the value of margins. Okay, वो actually margin का value finalize करेगा. So in short, ये दोनों line, and one more thing, ये दोनों line SVM के parallel ही चलने चाहिए. Okay, ये दोनों line SVM के parallel ही चलने चाहिए. Now guys, you know one thing, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, okay, now I have one line equation, and that line equation is equals to y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c. Now I want to find out another line parallel to the, I want to just find the equation of another line parallel to above one. So y1 is equals to mx1. Why m is there? Because मैंने ऐसे बोला था कि वो parallel होना चाहिए. So parallel in the sense, what is the parallel in the sense what? What will be the slope value? So slope of both this line are similar, like are same. दोनों लाइन का स्कोप का वैल्यू सेम होना चाहिए. स्लोप, आई वांट टू जस्ट से स्लोप, स्लोप इन द सेंस लाइक कितने एंगल से वो चल रहा है. ओके, द स्लोप वैल्यू विल बी सिमिलर. सो m की वैल्यू मैंने सेम. सो इस लाइन की इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने अपना लाइन का इक्वेशन लिखा है, wx plus b is equals to 0. ये मेरा SVM था, ये मेरा SVM था. तो अगर मैं आपको बोलूं मुझे अपर डायरेक्शन या लाइक उसके अबव या उसके बिलो एक एक लाइन चाहिए, so I can say that wx1, why w is similar, b1 हो सकता है, that's not a big deal, but b1 and b are like, these are the constants. यहाँ पे मैं c1 लिख दूं, these are the constants. Okay, तो इसको हम लोग कोई मतलब ज्यादा वैल्यू पे फोकस नहीं करने वाले. And this will be x2, this will be x2. Okay, so मैंने दोनों में w की वैल्यू सेम क्यों रखी? Because slope is same. Okay, दोनों पैरेलल लाइन, तो slope is same. So just check if wx plus b. Okay, यहाँ पे 1 लिखने का रीजन क्या है? We will just check that one also. Okay, and here also wx plus b equals to -1. तो एक में मैंने 1 लिखा, एक में मैंने -1 लिखा. But the question is why the value of w is same? Because why the value of w and b is same? Because the same slope value is there. Okay, now what about that 1 and -1? These are the constants, guys. These are the constants. Constants in the sense what? These are like जब हम लोग इस equation को solve करेंगे, then automatically this will be reduced. Okay, automatically वो ignore हो जाएगा. You can just write down c and minus c. Why I'm just taking c and minus c? Because दोनों लाइन सेम डिस्टेंस पे है. मतलब अपना जो सेंटर लाइन था वहां से अबोव लाइन एंड वहां से जो बिलो लाइन हमने ड्रॉ किया उनका डिस्टेंस सेम है. तो अगर आपको यहाँ पे c मिल रहा है तो यहाँ -c ही मिलेगा. अगर आपको यहाँ पे आउटपुट में p मिला, then here you will get actually -p, because दोनों opposite direction में है, nothing else. दोनों opposite direction में. Is it fine? So मैंने simplicity के लिए यहाँ पे 1 and -1 put किया था, but it's not a big deal. You can guys use anything. उसकी जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो. Okay, आप कोई भी constants यूज कर सकते हो. That's not a big deal. So now these are nothing but an equation of margin lines. wx plus b equal to 1 and wx plus b equals to -1. Okay, now consider in this line I have a point on this line. Okay, now let me take one more thing. Now consider मेरे पास एक line है. Let I say this is the x and y axis. These are the x axis and y axis. Now here I have one line. ऐसा कुछ मेरे पास line, and the equation of this line is equals to y equal to mx c. That is a common equation. Now consider I have some points on this line. So the first point is actually x1 y1. And another point is nothing but an x2 y2. Okay, that means what? ये point इस line पे है, उसका मतलब क्या हुआ? This point will actually satisfy the equation. मतलब इस point के लिए अगर मैं equation लिखूं, so equation will be y1 is equals to mx1 plus c, and for this point the equation will be y2 is equals to mx2 plus c. That I mean to say कि दोनों point actually line के ऊपर है. That means वो ये general equation को satisfy करेंगे. What is the general equation for the line? That is actually y equal to mx plus c. तो अगर x1 y1 इस line के ऊपर है, then x की जगह x1, y की जगह y1 में replace कर सकता हूँ. In a similar way, अगर x2 y2 इसी line पे है, तो उसका equation होगा y2 equal to mx2 plus c. I hope this is clear. So now in a let me just take 2 points. जैसे मैंने x positive और x negative दो points ले लिए. X positive and x negative दो points मैंने consider किए. So consider x positive is on line wx plus b. So in the place of this x, I can just put x positive, and the x minus, otherwise x negative, is on the position. Otherwise it is available on this. It is a point of the line wx plus b equal to -1. So in the place of this x, I can just put x negative. So here I just write down 2 equations, wx plus 1, wx positive plus b equal to 1,
wx negative plus b equal to -1. Now let me simplify this equation guys. इसको सिंप्लीफाई करना मतलब मैंने कुछ इस तरीके से किया, मैंने इन सब का इक्वेशन का मतलब इन सब का साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस एंड यहाँ नेगेटिव था तो प्लस, ये हम 10th में करते थे. नाउ दिस विल बी कैंसल आउट, so wx positive minus wx negative, let me just take w as a common, so w into x positive minus x negative and plus 1 and plus 1, because that minus 1 will be considered as a plus 1, so plus 1 plus plus 1 is equals to 2. Okay, so I hope यहाँ तक आपको clearly पता चला हम लोग क्या कर रहे हैं. We want to find out actually w and b but we want to choose a best value. So how to finalize this is the best one. So for that guys, we have to just calculate the margin, and if the margin value is maximum, you can simply say that w and t having a max value. W and b are the best actually. So what we did, हमने पहले SVM का एक इक्वेशन चूज किया, चूज तो नहीं किया, SVM का इक्वेशन यही होता है, उसके पैरेलल दो लाइन जो मार्जिन हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे उनके इक्वेशन हम लोग को डेवलप किए, wx plus b minus 1. Why the same value of w? Because it is parallel to the SVM, that means what, slope will be same. Okay, and 1 and -1 की जगह आप कुछ भी रख सकते हो. लेट ऐसे c, अगर मैंने c लिखा होता तो यहाँ c लिखा होता तो यहाँ -c ही होता. तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में आता 2c. दैट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज यहाँ पे भी c होता, हियर आल्सो इट विल बी c, दैट विल बी 2c. Okay, so हम लोगों ने actually and after the line equation we just choose 2 points, x positive and x negative. X positive and x negative are on a line wx plus b equals to 1 and wx plus b like equals to -1 respectively. So the equation will be like wx, x की जगह हम लोग यूज करेंगे x positive and दूसरे इक्वेशन में x की जगह रखेंगे x negative, and इसको सिंप्लीफाई किया तो that was the conclusion. ये हमने साइड में कहीं पे रख दिया कि this is the conclusion, in future we will just use this conclusion. Okay, in future इसको कभी यूज करने वाला है, that's that. तो इसको साइड में रखते हैं. Now this is the thing. Now ये सब कुछ हम लोग find out इसलिए कर रहे हैं because guys I want to just increase, otherwise I want to just find out a margin with a max value. Okay, maximum margin वाला मुझे एक value find out करना है. So finally guys, अब जब आप इक्वेशन कोई भी एक चूज करोगे, अब जो भी इक्वेशन कोई एक SVM चूज करोगे तो आपको वैल्यू कौन सा मिलेगा? But obviously I will just find two values actually, w and b, but मुझे नहीं पता ये बेस्ट है कि नहीं. So मैं क्या करूंगा, w and b are nothing but in variables. Why variables? Because उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. These are not the constants. मुझे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास w and b नाम के वेरिएबल्स होंगे जिसकी वैल्यू मिलेगी. But w and b ऐसे चूज करने जहां पे मार्जिन की वैल्यू मैक्स हो. So what I want to do, I want to just make an equation. मुझे m insert margin and w and b के साथ का एक इक्वेशन बनाना है कि जैसे w और b का वैल्यू मिलेगा, I will just put that value in that equation and then I will find the value of m, actually value of margin. तो मार्जिन का वैल्यू मिलने के बाद मेरे पास मान लो w और b के 5 वैल्यू मिले, तो सभी को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हम लोग को मार्जिन की वैल्यूज मिलती जाएंगे. देन उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा we will just choose that. That is also the procedure, but I mean to say कि मुझे एक्चुअली मार्जिन w and m तीनों का रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा. In short, we have to find out the margin equation with respect to actually variables, or with respect to actually w and b variables. Okay, so we have to find out that type of thing. Now let me take one more example. Like consider आप लोग को अगर वेक्टर पता है, like हम लोग कुछ वेक्टर्स in the sense what, consider I have 2 points. मान लो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ था and here I have another point. So consider this is the point A and this is the point B. So guys, अगर इन दोनों के बीच में मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, that line is nothing but a vector, you can just say. Okay, so लाइन के पास एक्चुअली दो चीजें होती है. तो वेक्टर के पास एक्चुअली दो चीजें होती है. The first thing is nothing but in direction. So it's A to B. So you cannot say it's B to A. अब B to A नहीं बोल सकते. It is A to B. So that is the direction. And another thing is nothing but in magnitude. मतलब उसका width B होता है. Width in the sense I mean to say distance between A and B. Okay, that is actually written by mod AB. So मैं वेक्टर पे क्यों आया? Let me just come to the point after few minutes. But अगर मेरे पास दो पॉइंट A and B और मुझे उनके बीच का कोई डिस्टेंस या वेक्टर फाइंड आउट करना है, so vector having two things. The first thing is actually nothing but a direction. Another thing is nothing but a magnitude. So अगर मुझे इन दोनों के बीच का वेक्टर, let I say that is V, मुझे V find out करना है. So what we have to do guys? We have to just draw two lines from the origin. तो origin से आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. Let me just draw two lines. So O to A, that will be the first line, and O to B, that will be the second line. Now consider the distance between these two lines is actually this distance is actually B, and this distance is nothing but A.
So you have to do this thing. Okay, so now this type of things will be there. Okay, so ऐसा कुछ मेरे पास है, तो you can simply say that. Okay, now अगर आपको ये still समझ में नहीं आया, then we have yeah, here this type of things we have. So this is the thing, A to B, like this is nothing but an origin. तो origin to ये एक point तक का हमारा distance, origin से दूसरे point तक का distance, यहाँ B to A find out किया है, otherwise उन्होंने blue line जो draw की, that is A. Just consider, तो ऊपर वाला line है, that is A, जो green line है, that represents a B. So A to B find out करना है guys, then simple equation is there, and that equation is actually that, okay, यहाँ पे उन्होंने solve नहीं किया, but that equation is quite simple, like x equals to A plus B. That is pretty simple. Okay, 1 minute, कहीं तो solve होगा. ठीक है, मैंने ये open इसलिए किया कि आपको समझ में आए. Oh yeah, here it is. So vector के पास दो चीज होती है, magnitude and direction. Okay, so अगर आप कोई भी चीज find out करना चाहते हैं, this is the magnitude and this is the direction. अगर ऐसा कुछ find out करना चाहते हैं, then अगर ऐसा कुछ find out करना चाहते हैं, then this is A plus B. Simply यहाँ से हमने start किया था from this point, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और वहां से यहाँ तक पहुंचे. In short, 0 से पहले हम blue के end तक पहुंचे, मतलब blue के head तक, that is A, and वहां जो हमारे पास red type का जो symbol है, मतलब that is a tail, वहां से इस point पे पहुंच गए, that is B. So total distance is A plus B. So according to us, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि okay, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था, that is the first thing. Okay, let me just draw it in a green way. So हम लोग यहाँ O से start कर रहे हैं, so O से A and A से B, O से A and A से B. So what is the total thing? So हम लोग अगर OB की बात करें, so that's nothing but a B. So B is nothing but a plus V, A plus V. Okay, so मैं V की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं? अगर मुझे V का वैल्यू फाइंड आउट करना है, then I can simply say that that's nothing but a B minus A. That is nothing but a B minus A. Is it clear, मौलिक सर, विजय सर, पृथ्वीश भाई? ये वेक्टर वाला समझ में आया? Yes. Okay, fine. Still मैं आपको ये वेबसाइट रेफरेंस वाला पास कर दूंगा. So अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, then guys you can just do that. So now here in our equation, consider this is the first point. जैसे हमने अभी लिया था, this is my first point, x negative. This is my next point, that is actually x positive. मुझे इन दोनों के बीच का कुछ वेक्टर फाइंड आउट करना है. What we have to do? We have to choose a point. यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. Consider that is actually like x negative. This is actually x positive distance. Okay, that is O. तो मुझे ये V फाइंड आउट करना है और यहाँ से इस तरह का डायरेक्शन चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन. ऐसा कुछ मुझे वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो इस तरीके से कुछ होगा. यहाँ से पहले हम यहाँ पहुंचेंगे. From there we will go to up to this one. Okay, so x like the equation will be actually x positive plus x negative plus V equal to x positive. X negative plus V is equals to x positive. So x negative को सामने की तरफ भेजे, and what will be the value of V? The value of V will be actually x positive minus x negative, something like this. Okay, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, x positive minus x negative. What is that x positive and x negative? These are nothing but in points. Okay, उसको हमने as a points consider किया. आप उसकी जगह a और b भी लिख सकते हो. It's not a big deal. Okay, so this equation, ये हम लोग को देखना है. That is nothing but in vector value. That's nothing but in vector value. Right now यहाँ कुछ projection की बात हुई है, but just consider that is nothing but in vector x positive minus x negative. मतलब ऐसा कुछ मैंने vector draw किया हुआ. So how to calculate the value of this x like vector? So that is nothing but x positive minus x negative. Now another thing is, guys, मुझे actually इन दोनों के बीच में maximum value चाहिए. That's nothing but in margin, and margin will be a perpendicular value. ये perpendicular नहीं है, इसका direction कुछ भी हो सकता है. Depends on a point. मान लो एक point आपने यहाँ choose किया था, then it will be like this. It will be like this. But मुझे perpendicular value चाहिए. मुझे actually आपको maximum value चाहिए, maximum width calculate करना है, then आपको perpendicular value चाहिए. So now another thing is, मान लो ये मेरा perpendicular value था जो यहाँ पे एक line draw किया है, and this is my angled value. Okay, in short this is my vector. So मुझे actually अब क्या करना था, ये मान लो vector 1 है, this is my vector 2, तो मुझे vector 1 का vector 2 पे projection चाहिए. Vector 1 का vector 2 पे projection चाहिए. So that will be the value actually. Projection रखोगे, then you will get the value. Okay, now that is also the point. So how to get the value of projection? So consider you have two values actually. This is the first vector, this is the second vector, and दोनों के बीच का distance चाहिए, तो आप इस तरीके से projection value find out कर सकते हैं. Projection A over B. Again, for that we have a simple formula. What we have to do, if you want to just find out the projection, then you have to simply write down A into B divided by mod A. Otherwise, आपके पास जो भी वेक्टर है, उसको दूसरे वेक्टर के यूनिक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है. यूनिक वेक्टर इन द सेंस A divided by mod A. A divided by mod A. अगर आपका वेक्टर का वैल्यू W है, then W divided by mod W. Mod W in the sense underscore of S square plus B square. अगर A and B are the actually coordinates.
Okay, A and B are the coordinates. What we have to do, we have to just find out, agar projection hai, then you have to just find out, you have to just multiply that vector with the, actually with the unit vector of another one. So fine. So guys, यहाँ हमारे पास जो unit vector की बात आ रही है, दूसरे vector की बात आ रही है, that's nothing but a slope of your line. That is nothing but a slope of your line, and that can be computed by actually W. So W is nothing but a slope. So what I will do, this is my vector value. This is my vector value, x positive minus x negative. This is my vector value. And what about this one? This is the unit vector, W by mod W. And now guys, you know, actually W into x positive into, sorry, W into x positive minus x negative, it's nothing but a 2 into multiplied by constants. In short 2c, otherwise 2p, whatever. Constant value अगर यहाँ पर 1 रखिए, जैसे हम लोगों ने 1 रखा था, that means it's 2 only. Okay, so इसका ऊपर जो मतलब हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी जगह मैं 2 रख सकता हूँ. That's nothing but a margin is equals to 2 divided by mod W. Margin is equals to 2 divided by mod W. You can just write down it like similar, like m is equals to 2 under root of W into W. What is that? Under root of W or W. So consider अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, आप 2 डायमेंशनल पे काम कर रहे हो, A and B, then under root of s square plus b square. अगर 1 2 है, then under root of W square. You can write down that one like W, but just forget that. So this is the margin equation. This is the margin equation. Okay, so this equation we will use in further sessions. But how to compute this? So उसके लिए भी मैंने एक वेबसाइट फाइंड आउट किया है. स्टैक ओवरफ्लो पे इसका अच्छा खासा एक explanation दिया हुआ है. Not on Stack Overflow, okay, that actually Math Stack Exchange. So here the same example is there. So दो अलग-अलग तरीके से उन्होंने explain किया हुआ है. You guys just read that also. Okay, ये जो हम लोगों ने find out किया ये तरीका है. Okay, width equals to maximum width is equals to like x positive minus x negative into W into mod W. So from where this x positive and x negative comes, x positive minus x negative कहाँ से आएगा? That's nothing but that vector value. Because we choose 2 points, x positive and x negative, and find out हम लोगों ने उसके बीच का actually vector value find out किया. And what about that margin? So अगर projection find out करना चाहते हो तो projection margin in the sense that's nothing but in projection because it's an actually perpendicular line. So अगर आप projection find out करना चाह रहे हो guys, that means एक vector का दूसरे vector पे projection find out कर रहे हो. Projection in the sense what? Consider we are applying some sunlight or some light effect. So some shadow effect will be drawn on another vector. That's nothing but a projection. Okay, so projection value find out करना है, then what's the concept? Concept is एक vector का दूसरे vector के unit vector से multiply करना है. So this is my first vector and this is the unit vector W by mod W because that's the slope actually. तो इन दोनों का multiplication करके final हमको ऐसा कुछ आंसर आएगा 2 divided by magnitude of W. Okay, so that's nothing but an actually maximum margin. That's nothing but a maximum margin. और हम लोग को ऐसा ही कुछ equation चाहिए था जिसमें W और B हो या W हो. तो हमारे पास एक वेरिएबल के साथ का इक्वेशन डेवलप होगा. So that